Okay, so division and mode method, it takes the two number and return the pair of number and consisting the quotient and remainder. The division and mode means it is divide the number and it return the quotient as well as the remainder. So both the thing it is written. It is written your quotient, another is remainder. So if you see this example, print division and mode, the 8 divided by 3. So when you divide 8 divided by 3, your quotient is 3, your result is 3, and your result is 2, and your remainder is 2. ओके तो आम 8 को डिवाइड करवा तो आसो के 3 इंटू 2 6 6 पर आम रिमाइंडर आसो 2 तो यहाँ है क्वोशिएंट है 2 रिमाइंडर है 2 सेमती आम जो यूज करवा 3/8 हेले तर आमर क्वोशिएंट बा जो रिजल्ट आसो 0 आसो रिमाइंडर टा 3 आसो देन 5 डिविजिबल बाय 5 क्वोशिएंट है 1 remainder is 0. Okay, so these are all the function which is used for division and mode, which is used to display the quotient as well as the remainder of the value. बुझेला? प्रियदर्शिनी, Somesh, Yes, sir. okay, now you write the note. Division and mode method takes two number and return the quotient and remainder. It takes two parameter, x for numerator, y for denominator. That is the result. Then print division and mode. That is showing you quotient is 2 and remainder is 2. Then again if I pass, I just reverse it. First I pass here 3, then I pass here 8. Okay. Quotient is 0 and remainder is 3 here.
Then next is and if I pass 8.0, then 3, it is showing you 2.0 and 2.0. If I change it here, in question it is showing you 0.0 and the remainder is 3.0 here. बुझेला? हर्षा, प्रियदर्शिनी, अमित, Yes, sir. सुमित, Yes, sir. that is a division and mode function.
then enumerate method, this method are the counter to a iteratable and return it. The enumerate method takes two parameters. One is iteratable, a sequence of an iterator or object that support iteration. Another is start. The enumerate start counting from this number that is omitted. 0 is taken as start. The first हमें यूज करिबा iteratable, then हमें यूज करिबा start. Iteratable ले कौन आसीबो ना एटी मु डिफाइन करले grocery, bread, milk and butter. Okay, when you are using a enumerate method, enumerate grocery, so by defining another variable, आउ गोटे variable define करले I am audible. A screen show करछि Yes. स्क्रीन टा डिस्प्ले Yes, करछि sir. ना ना सर No, स्क्रीन पर screen recording. एबे देखो असला स्क्रीन हाँ सर ओके तरी लिखाला एनुमरेट ग्रोसरी द प्रिंट तबरे एटे मु लिखली ग्रोसरी जेतरा ग्रोसरी लिखुची बाय डिफॉल्ट कोन करबो ए जो लिस्ट रे हमें जो एलिमेंट पास करले तार गोटे गोटे सीरियल नंबर से ऐड कर दला 0 1 2 एठी आ गोटे मु डिफाइन करली एनुमरेट ग्रोसरी स्टार्टिंग फ्रॉम 10 10 नु ये स्टार्ट करियो 10 नु स्टार्ट करले 10 टा असाइन हला ब्रेड पई 11 असाइन हला मिल्क पई 12 असाइन हला बटर पे okay that is a what function that we are using enumerate which is assigned a auto generated number. If you are not specifying any number then by default it is starting from 0. If you specified any number then it is starting from the next part next onwards. So right Sir, माने कौन एटा index number जो सेटा हाँ इंडेक्स नंबर कहि परिबा किंतु एठी भी हमें जदि निजे गोटे किसी वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू पास कर दो धर 10 पास कर दो तो से 10 नो काउंट हम किंतु आरए रे कोन हुए इंडेक्स नंबर ता हमर 0 ही सब स्टार्ट हुए एठी हमें निजे भी वैल्यू देई परिबो बुझियो कि तो मैंने एटा similar to index. हाँ इट इज सिमिलर टू ए इंडेक्स बट इट इज a user defined index that we provide. Okay. This method adds counter to iteratable and returns it. It returns the enumerate object. It returns the enumerate object. It takes two parameter. One is iteratable. It takes two parameter. First is iteratable. Iteratable लिखा a sequence. It is a sequence or an iterator
or object that support iteration, or object that support iteration. Start means it start the counting from this number. Start means it is start counting from this number. If start is omitted, then default value 0 is applied. Enumerate start counting from this number. If start is omitted, then default value 0 is applied. I show all the examples. That is like bread, milk, butter. The enumerate grocery. Enumerate grocery. So see that it is automatically added 0 to bread. Bread ପାଇଁ 0 add kala, milk ପାଇଁ 1 add kala, butter 2 ପାଇଁ butter add kala. That is likely enumerate grocery 10. The 10 means it is starting from 10. The 10 hela bread, 11 hela milk, 12 hela butter. बुझ पाइलो? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. It is another example. Bread, milk, butter. So here we are not assign any value. We are using a loop. For item in enumerate grocery, so it is printing you item. So when it is printing you item, it is automatically show 0, 1, 2. Then same output if I use here, print count item in grocery, then print count as item. Okay, then print ln. Means it is calculate as item. 0 bread, 1 milk, 2 butter. Next is if you want to change the sequence, then write here for loop, variable name, item in enumerate. Okay, then grocery starting from 100. That is showing you 100 for bread, 101 for milk, then 102 for butter. বুঝলা প্রোগ্রামটা? Yes, sir. Now check this example. Serious. So 3 examples were given here. Bread, milk, butter.
Then we pass here item in enumerate grocery. Item in enumerate grocery. Then it will display what automatically 0, 1, 2. Then for item in enumerate grocery, print count item. Count item যদি আমি use করিবা তো দেখো output কোন আছে 1 0 1 2 আর তো সেই জায়গায় মু যদি print count item এটা define कराला যদি grocery রে মু pass कर দিব 100 then it will start from 100 तो first ଆସିବ କେତେ 100 101 102 bread milk butter बुझाला Okay. अमित Okay. okay. ସେଇଟା ଆଉ ଥରେ এটা আউতরে দেখো এটা হলা ব্রেড মিল্ক বটর এদিটা ডিফাইন করালা ব্রেড মিল্ক বটর তারপরে মু এটি লুপিং ইউজ কলি আইটম ইন এনুমরেট গ্রোসরি যদি লুপিং ইউজ করিছি সব লিস্ট रो सब एलिमेंट रिट्राइव करबाकू जेहेतु मु एनुमरेट फंक्शन यूज करिছি तो बाय डिफॉल्ट गोटे ऑटो जनरेटेड नंबर क्रिएट कला बाय डिफॉल्ट इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम 0 किंतु एठी देखो सेम प्रोग्राम फॉर काउंट आ गोटे वेरिएबल डिफाइन कली काउंट आइटम इन एनुमरेट ग्रोसरी तो जहाँ भी एलिमेंट आम आइटम रो आसीबो तो काउंट रे स्टोर हो प्रिंट काउंट आइटम तो काउंट हेले केते नंबर्स रहिला एंड आइटम कैटेगरी केते रहिला से चेक करियो बुझला yes sir So it is a for count use like count टा कौन किसी खुद initial तो इन्हें use किन देला सर it. by default 0 किछि इनिशियलाइजेशन करिया रखने आज इट इज अ स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज यू हैव टू डिफाइन ए वेरिएबल एनीवे मु जोटी चाहिबी मोर रिक्वायरमेंट हिसाब रे डिफाइन कर परिबी एटा नै जे जरा हम स्टार्टिंग प्रोग्राम करबा जरा अलगा प्रोग्रामिंग लैंग्वेज रे हम स्टार्टिंग करछे सी सजेस्ट करछे जे यू हैव टू डिफाइन ए वेरिएबल फ्रॉम स्टार्टिंग तो एठी हमर सेटा डिफाइन करिया दरकार नै the next example then evaluation method purge a expression to this method and it run the python expression code within a program माने गोटे स्टेटमेंट भितरे गोटे within the statement जदि मते किछि एग्जीक्यूशन करिवार अछि तले मो इवैल्यूएशन यूज करबी बा गोटे स्टेटमेंट टाको मो इवैल्यूएट करबी अरिथमेटिक इवैल्यूएशन में तो eval function is used so this method purge the experience pass to this method and runs in the python expression देखो एटी हमें लिखले x equals to 1 the print evaluation x plus 1 so actually evaluation भितर जो पैरामीटर टाटी पास कराई छी if you notice so that is in a string format that is string format रे अछि किंतु as we are using evaluation तो से कम करिवो जो 1 वैल्यू टा अछि से राशि के x रे स्टोर हे जिवो 1 + 1 ऐड हे कि हमते आउटपुट देखेबो 2 बुझला अच्छा Yes sir. शादी हिंदी को स्टेट करथु जब से तो ये eval use करन नथि. हां हां सर. तो लिखो this method purge the expression
pass to this method and run the Python expression within a program. Run the Python expression within a program. Okay, so just wait. Okay, this is a evaluation function. এটা भी হ্যাঁ গেছে। এটা actually এটা দেখেব x equals to 1 print evaluation equals to x plus 1 x ର value already ମୁଁ 1 ରେ store କରିଛି ତାକୁ ଆದ್ರೆ ଆଉ ଗୋଟେ 1 ମୁଁ ଏଠି add କରିବି।
ओके तो ये हमारा 1 + 1 ये 2 स्टोर करिए सब स्टॉक है बुझेगा तो इवैल्यूएशन टा नेक्स्ट पढ़ाऊँ देखो ये देखो x = 1 प्रिंट इवैल्यूएशन 1 + 1 ये 2 दिखेगा बुझेला Yes, हाँ sir. Yes, sir. देखो जी नेक्स्ट होची एग्जीक्यूशन मेथड द एग्जीक्यूशन मेथड इट प्रोवाइड एग्जीक्यूट डायनामिकली क्रिएटेड प्रोग्राम मीन्स आम स्टेटमेंट भितर प्रोग्राम टा पास करवा से रन ओके राइट एग्जीक्यूशन मेथड एग्जीक्यूट डायनामिकली क्रिएटेड प्रोग्राम which is either a string or a code object সেটা অটোমেটিক আসিব আপডেট হেলে আসিব they execute a dynamically created program which is either a string or a code object now what is the program let's see here the program equals to a is equals to 5 /n